हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी क्वेस्ट। एंड आज हम लोग करेंगे सितंबर 2020 का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा रिवीजन में आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए एंड आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूज़ आता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ईटी ऑफ वर्ल्ड बैंक, दैट इज़ राजेश खुल्लर। नेक्स्ट न्यूज़, who has been conferred with Lifetime Achievement Award 2020 by Euromoni, that is Aditya Puri. Next news, Small Industries Development Bank of India SIDBI will develop the MSME ecosystem in which state, that is Rajasthan. नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज़ अपॉइंटेड whom एज इट्स न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, दैट इज ताकीहिको कोनिशी। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू लोन स्कीम अपना घर ड्रीम्स, दैट इज आईसीआईसी होम फाइनेंस। एंड यहाँ पे कुछ और डिटेल्स हैं इस स्कीम के, तो वो आप लोग रीड कर लीजिएगा। स्कीम हैज़ अनाउंस्ड ऑन March 30, 2020, ये डेट भी याद रखना आप लोग, for a period of 90 days and was further extended for 90 days up to September 25. Okay. Next, which bank has set up a new vertical called Emerging Entrepreneurs Business, that is Bandhan Bank. Next news, which bank has launched lead management system iLead 2.0, that is कैनरा बैंक, और इसका iLead का फुल फॉर्म है इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। विच म्यूचुअल फंड हैज़ स्टार्टेड अ न्यू कैंपेन कॉल सीफी और एसआईपी इन फिक्स्ड इनकम, दैट इज आईडीएफसी म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट न्यूज़, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज sought पार्लियामेंट अप्रूवल टू इन्फ्यूज 20,000 crore into public sector bank PSB. Okay, Watch Company and State Bank of India have launched India's first contactless payment watch, that Titan. इससे आप लोग contactless payment कर सकते हैं up to 2,000 rupees without entering any PIN. Okay. नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। विच ब्रांड वॉज रैंक्ड एज इंडियाज टॉप ब्रांड फॉर 7th consecutive year in 2020 brands top brand JIT top 75, that is HDFC Bank. Next news, which bank has started a program by the name महिला आत्मनिर्भर साली अचानी, that is State Bank of India, असम में किया गया था ये। ओके, नेक्स्ट न्यूज, which bank has announced the launch of video KYC facility for its customer, that is HDFC Bank. Next news, Amitabh Ghosh has passed away recently, was the Reserve Bank of India governor for how many days, that is 21 days, and he is the shortest serving RBI governor. Okay, यहाँ पे कुछ डिटेल्स है वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। SEBI has set up a technical committee on social stock exchange under whose chairmanship, that is Harsh Kumar Bahanwala. Okay, next news, which digital payment platform has partnered with Visa for card-based payment with tokenization, that is Google Pay. Next news, who has been appointed as the new administrator of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank, that is A.K. Dikshit. Next news, which bank will launch SafePay, a contactless debit card-based payment facility, that is IDFC First Bank. एंड यहाँ पे ये कुछ और डिटेल्स है, दैट इज सेफ पे काम करेगा NFC टेक्नोलॉजी पे, एंड इससे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट अप टू 2,000 पर ट्रांजेक्शन एंड लिमिट है 20,000 पर डे का। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, RBI has planned to enhance the cybersecurity of urban cooperative bank by using in which 5-pillared strategic approach, that is CARD. Which bank has launched the warehouse commodity finance app, that is HDFC Bank. Next news, which among the following has announced the launch of its new branding campaign Contactless Connection, that is SBI Card. Next news, which among the following has decided to introduce from January 1, 2021 the positive pay system for check, that is Reserve Bank of India. Okay, and 50,000 and above के लिए है और 5 lakh and above के लिए मैंडेटरी है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। IRDAI हैज़ आइडेंटिफाइड विच अमंग द फॉलोइंग एज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स। ओके, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस एंड General Insurance Corporation of India. Next news, RBI asked banks to complete automation of NPA recognition by 30th June 2021. ये important हो, आप याद रखना। ओके, RBI has appointed a 3-member committee of director to look after the affairs of Lakshmi Vilas Bank, who is the chairman of COD committee of director, that is Meeta Makhan. Next news, which district of Tamil Nadu has been selected as the first fully digital economy district of state, that is Virudhunagar. Next news, among the following financial company has decided to launch Pay Bima, that is Mahindra Finance. Next news,
which bank has launched the virtual property exhibition Home Utsav, that is ICICI Bank. Next news, which bank will invest 650 million euro into the construction of Kanpur First City Metro Line, that is European Investment Bank. Okay. नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. विच बैंक हैज़ टॉप्ड द ईस्ट बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0 इन द टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स कैटेगरी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा. नेक्स्ट न्यूज़, विच बैंक हैज़ लॉन्च द आई स्टार्टअप 2.0 program for startup, that is ICICI Bank. Next news, who has been appointed as the brand ambassador of Bajaj Allianz Life Insurance, that is Ayushman Khurrana. Next news, who has been appointed as the MD and CEO of Punjab and Sindh Bank, that is S. Krishnan. Next news, who has been appointed as the new MD and CEO of South India Bank, that is Murali Ramakrishnan. Next news, which bank has launched the second innings TAP VRS 2020 scheme, that is State Bank of India. ये VRS स्कीम का कुछ और फैक्ट्स है. प्रपोज स्कीम सेकेंड इनिंग टैप VRS 2020 is aimed at optimizing human resource and cost of bank. Okay. Next point है, the scheme will be open to all permanent officers and staff who have put in 25 years of service or have completed 55 years of age on the cutoff date. The scheme will open on December 1 and will remain open till end of February. I think that application for VRS will be accepted during this period only. Next news, report on fraud and risk management in digital payment. ये report release किसने किया था? That is Data Security Council of India and PayPal. ये दोनों ने मिलके किया था release. And the report attempts to discuss the sophisticated online payment fraud mechanism threats in payment ecosystem. 3 types of fraud identify किया गया है, that is buyer side fraud, मर्चेंट साइड फ्रॉड एंड साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड. ओके, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या क्या है वो आपको याद रखना है अच्छे से. तो हम लोग देखते हैं. द ई कॉमर्स मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 200 बिलियन बाय 2026 फ्रॉम 50 बिलियन इन 2018. ओके, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है. नेक्स्ट, UPI transaction in India have crossed 149 crore in volume and $41 billion in transaction value in July 2020. RBI predicts the number of digital transactions to increase from 2069 crore in December 2018 to 8700 crore in December 2021. ये डेटा आपको याद रखना है जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ. ओके, इम्पॉर्टेंट है. Next, the internet user base is expected to grow 835 million by 2023 from 560 million in 2018. ये दोनों डेटा आपको याद रखना है. As of March 31, 2019, 925 million debit and 47 million credit card has been issued. ये दोनों भी याद रखना है आपको. Okay. As a result of the above momentum, the growth of online shopper is 73% in Tier 1 cities, whereas a staggering 400% in Tier 2 and Tier 3 cities. Okay. Which bank is planning to launch a loan product named Safal for organic cotton growers, that is State Bank of India. और इसकी कुछ और डिटेल्स हैं. सफल का जो आपका फुल फॉर्म है, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन. And the bank is using artificial intelligence and machine learning in a big way for generating business. Okay. Next news, Government of India has set up an expert committee under whose chairmanship to assess the relief to bank borrowers, that is Rajiv Maharshi. Important question है. Next news, who has become the first female chief executive officer of Citigroup, that is Jane Fraser. Next news, which financial institution has signed a pact with Sugana Foods for $15 million debt financing, that is ADB. So ये last question है, which payment bank has ceased to be banking company within the meaning of Banking Regulation Act, that is Aditya Birla Idea Payment Bank. Okay. ये सितंबर का कंप्लीट होता है यहाँ पे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, थैंक यू, बाय बाय.